Hello everyone, welcome to Joblessing. So in this video we are going to study about divisibility. So what is divisibility? Let us take an example. So 12 by 3. So what is 12 by 3? So we have to find a number such that when it is multiplied by 3 it should give this 12. तो हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो वी हैव टू गेट 12. दैट नंबर इज 4. दैट इज 12 by 3 is 4. सिमिलरली 15 by 3. तो ऐसा एक नंबर ढूंढना है जिसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दो वी हैव टू गेट 15. दैट नंबर इज 5. नाउ द नेक्स्ट थिंग वी हैव टू चेक फॉर डिविजिबिलिटी. दैट इज टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी. So first, powers of 2. So why these numbers are called powers of 2? This is 2 power 1, this is 2 square, this is 2 cube, and this is 2 power 4. Right. So if you want to check whether a number is divisible by 2 or not, you just have to check the last digit. The last digit. For example, 36 is divisible by 2. Why? Because last digit is divisible by 2. Similarly, divisibility by 4, we have to check the last 2 digits because the power is 2. For 8, last 3 digits because the power is 3. For 16, this is last 4 digits because the power is 4. For example, 1024. We have to check whether it is divisible by 2, 4, 8 or not. First thing, unit digit is 4, it is divisible by 2, 4 is divisible by 2, so 1024 is divisible by 2. Next, for 4 we have to check last 2 digits. Last 2 digits are 24. 24 is divisible by 4, yes, it is divisible by 4. Now for divisibility by 8, last 3 digits. What are the last 3 digits? 0 to 4, that is same as 24. So 24 divided by 3 is 3. That is divisible by 8. Now, so for 2 we have to check last 1 digit. For 4 last 2 digits. For 8 last 3 digits. Now if you want to find the remainder, अगर आपको रिमाइंडर पता करना है after dividing by 2, 4 or 8. Let's take an example. तो 214 को 4 से डिवाइड करने के बाद you have to find the remainder. So how to find the remainder after dividing by 4? No need to divide the entire 214. Just divide the last 2 digits. Last 2 digits are 14 by 4. 4 3s are 12. Remaining is 2. Similarly, one more number, 3025 is there. After dividing by 8, you have to find the remainder. So for 8, divisibility rule is you have to check the last 3 digits. So what are the last 3 digits here? 0 to 5. So divide 0 to 5 by 8. 8 3s is 24. That is 24. So what is remaining? Remaining is 1. So to check the divisibility or to find the remainder, for 4 you have to check the last 2 digits. For 8 you have to check the last 3 digits. For 2 you have to check the last digit. One more thing. Let's assume some numbers, some even numbers and their squares here. That is n square. So what are even numbers? Even numbers हैं क्या? 2, 4, 6, 8. तो ये numbers, these numbers are divisible by 2. Now what are their squares? 2 square is 4, 4 square is 16, 6 square is 36, 8 square is 64. So we can write 4 as 1 into 4, this one as 4 into 4, this one as 9 into 4, this one as 16 into 4. So we can clearly see these numbers are divisible by 4.
अगर कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होगा तो जो उसका स्क्वायर होगा दैट शुड बी डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 4. अगर n is divisible by 2 then n square will be divisible by 4. Let's solve one question based on this concept. So the question says if n is a 3-digit number, कितने भी digit का number हो, we don't bother about that. If n is a 3-digit number and n square is a number that is ending with 74, how many values of n are possible? So first thing, it is an even number. n square क्या है? एक even number है. Then n should be an even number as well. अगर n square एक even number है तो n भी एक even number होना चाहिए. So what are even numbers? Even numbers are divisible by 2. Numbers which are divisible by 2. This is n. If n is divisible by 2, then n square should be divisible by 4. It should be divisible by 4. लेकिन n square क्या दिया हुआ है? n square is a number which is ending with 74. तो अगर कोई भी नंबर divisible by 4, divisibility by 4 चेक करना है तो we have to check the last 2 digits. Last 2 digits. So now divide this last 2 digits by 4. Clearly 74 is not divisible by 4. तो इसका मतलब है ऐसा कोई नंबर नहीं है जो ये satisfy करता हो. There is no such number to satisfy that n square should end with 74. N square cannot end with 74 for any even number. So there is no such number. There is no such number. Next thing, divisibility by 3 and 9. So how to check whether a number is divisible by 3 and 9 or not? So let's take an example. Say 142. 142 is a number. Now how to check whether it is divisible by 3 or not? 3 or not. So sum of digits must be divisible by 3. So what are sum of digits? 1 plus 4 plus 2. So 1 plus 4 plus 2 is 7. So 7 is not divisible by 3. So hence 142 is also not divisible. तो अगर sum of digits divisible नहीं होगा तो that entire number will also be not divisible. Take one more example. Say 141. So 141, it is 1 plus 4 plus 1, that is 6. So 6 is divisible by 3. Divisible by 3. So 141 is also divisible by 3. अगर sum of digits 3 से divide होगा तो that number will also be divisible by 3. Similarly for 9 as well. तो अगर sum of digits possible sum of digits are 3, 6, 9. If you are getting sum of digits as 3, 6 or 9, that number will be divisible by 3. कैसे? मान लो one number is 15. Here digital sum of digits is 6, तो 15 भी 3 से divide होगा. तो one more 18, sum of digits 9, this is also divisible by 3. If 12, sum of digits is 3, this is also divisible by 3. Now divisibility by 9. For example, take same 148. So 148 sum of digits is 1 plus 4 plus 8, that is 8 plus 4 12 13. अगर 13 डिवाइड होगा या नहीं पता चल सकता. If you cannot find whether it is divisible by 9 or not, then add these numbers again, add these digits again. Now you got a single digit number. 4 is not divisible by 9, then 148 is also not divisible. Take one more example, 729. To add 7 plus 2 plus 9, that is 18. Again 1 plus 8 is equal to 9. So sum of digits is 9, then 729 is divisible by 9. So sum of digits has to be 9 to make a number divisible by 9. Solve question based on these numbers. Now if 36A79 is a number which is divisible by 9,
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो 36879 इज अ नंबर, एक ऐसा नंबर है जो 9 से डिवाइड हो रहा है, तो वी हैव टू चेक फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? नाउ फॉर एग्जांपल 729, ये हमने देखा कि इट इज डिविजिबल बाय 9, तो वी कैन रिमूव ऑल 9s। 9 अगेन 7 plus 2 is 9, that means 729 is divisible by 9। अगर जितने भी 9s हैं उनको निकालने के बाद भी अगर ये नंबर डिविजिबल होगा then it is divisible, else not। now 3 6 8 7 9, now 6 plus 3 is 9, we can cancel this, 9 we can cancel। now a plus 7 should be divisible by 9। तो what divisibility by 9, what is the condition? Sum of digits must be equal to 9। if a plus 7 is 9, then what is the value of a? It is 2। yes, or else you can do sum of digits as well। so 6 plus 3 is 9, 6 plus 3 is 9, 9 plus 9 is 18, 18 plus 7 is 25, plus a, this should be equal to 9। now 5 plus 2 is again 7, 7 plus a is 9, again you will get a is equal to 2। so this is how you can do। अगर we are getting 2 digit number or a 3 digit number, इसको we have to make a single digit number, we have to make it a 1 digit number। similarly the next one, so 4656764 is divisible by 3, find the sum of all possible values of a। तो 9 में possible value एक ही था, यहाँ पे we can find some different possible values। so how to find? 4 plus 6 plus 5 plus 7 plus x plus 6 plus 4, this number should be divisible by 3। तो अगर ये नंबर को 3 से डिवाइड होना है तो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज? 3 6 और 9। नाउ ऐड ऑल द वैल्यूज। सो 7 plus 6 plus 4 is 10, 6 plus 4 is 10, that is 20, 7 plus 5 is 12 plus x। now this is 20 plus 12 is 32 plus x। now this becomes 3 plus 2 5 plus x। now these values should be 3 6 or 9। अगर x की वैल्यू कोई भी रखोगे तो 3 is not possible because 5 is more than 3। now if you put x as 1, you can get 6, that is also divisible by 3। one possible value is 1। now if you put x value as 4, again it is divisible by 3, so another possible value is 4। so how many possible values are there? There are 2 such possible values, there are 2 such possible values। now one more question, if 57a63b5 is divisible by 9, then what is the minimum value of a plus b? तो अगर a नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है तो what is the minimum value of a plus b? so the number given is 57a63b5। so 6 plus 3 is 9, we can cancel this क्योंकि 9 digital sum is 9, तो it is divisible by 9। तो 7 plus 5 is 12 plus this 5 plus a plus b, this should be equal to 9, exactly equal to 9। so again 2 plus 1 is 3 plus 5 plus a plus b is equal to 9, this is 8 plus a plus b is equal to 9। so what is the value of a plus b? minimum value will be 1। so this is how we have to solve the question। अगर आपके पास सम ऑफ डिजिट्स में 2 डिजिट्स हों, 3 डिजिट्स हों, 4 डिजिट्स हों, इन सारे नंबर्स को फॉर एग्जांपल 14 आ गया या 163 आ गया या 1764 आ गया, वी जस्ट हैव टू ऐड ऑल द डिजिट्स टू मेक इट अ सिंगल डिजिट नंबर। वी हैव टू मेक इट अ सिंगल डिजिट नंबर।
So here sum of digits is 63, we can cancel because it is divisible by 9. 5 plus 5, 10 plus 7 is 17. 17 means 8 plus a plus b should be 9. Then sum of digits a plus b will be equal to 1. Now divisibility by 5. So we can write the table of 5. 5, 10, 15, 20, 25, etc. So we can clearly see the unit digits, the possible unit digits are 0 or 5. So the condition is if any number is ending with 0 or 5, if any number is ending with 0 or 5, that number is divisible by 5. For example, 1670 ending with 0, divisible by 5. 175 ending with 5, so it is divisible. 1763, it is not ending with 0 or 5, so it is not divisible. So this is how you have to check divisibility by 5. Ending number should be 0 or 5. Next, divisibility by 6, 12 and 15. So since these are non-prime numbers, these are not prime, these numbers are not primes. So how to check? 6 factors are 2 and 3, because 6 can be written as 2 into 3. 12 can be written as 4 into 3. 15 can be written as 5 into 3. So if any number is divisible by both 2 and 3, it is divisible by 6. So condition for 2 is last digit. Condition for 3 is sum of digits. Example, we have to check a number whether it is divisible by 6 or not. Example is 144. Now 4 is divisible, 4 unit digit is 4, so it is divisible by 2. So sum of digits 4 plus 4 is 8, 8 plus 1 is 9, so it is divisible by 3. So since it is divisible by both 2 and 3, it is divisible by 6. Similarly 12. So factors are 3 and 4. So same example 144. To check divisibility by 3, sum of digits 4 plus 1 5, 5 plus 4 9. 9 is divisible by 3. Next for 4 last 2 digits. Last 2 digits. So what are the last 2 digits here? 44 by 4 is 11, exactly divisible. So it is divisible by 4 as well. So it will divisible by 3 into 4, that is 12. It is divisible by 12. Similarly 15 we have to check for both 5 and 3. अगर कोई भी नंबर 5 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, that number will be divisible by 15. Now divisibility by 11. Now this one is very important. Now let's take an example. 3, 6, 7, 4, 5, 3. So अगर कोई एक नंबर है तो हमें चेक करना है कि whether it is divisible by 3 or not. Just take the difference of the numbers. 5 minus 3 is 2 plus 7 minus 4 is 3 plus 3 minus 6 is minus 3. It is minus 3. So minus 3 plus 3 gets cancelled, it is 2. Now this 2 is not divisible by 11. This 2 is not divisible by 11. Then this entire number is also not divisible. Right? So take one more example. 1, 2, 3, 3, 2, 1 is a number. So 2 minus 1 is 1 plus 3 minus 3 is 0. 1 minus 2 is minus 1. So minus 1 plus 1 gets cancelled, it is 0. So 0 is divisible by 11. Then this number is also divisible by 11. तो अगर आप ऐसा alternative difference का sum अगर आप लोगे तो that number should be equal to 0 or multiple of 11. Then only that number will be divisible by 11. Or else one more thing you can remember. कैसे? अगर कोई भी एक नंबर है A, B, C, D, E, F. So these are odd places A, C, E, and these are even places B, D, F.
तो अगर इस टाइप का कोई नंबर है तो नंबर एट ऑड प्लेसेस दैट इज ए सी एफ, ए प्लस सी प्लस एफ, माइनस नंबर एट इवन प्लेसेस बी डी एफ, ए सी ई माइनस बी डी एफ, बी प्लस डी प्लस एफ. दिस शुड बी इक्वल टू 0 और मल्टीपल ऑफ 11. कैसे? 1 3 3 1. So these numbers are at odd places, 1 plus 3, minus these numbers are at even places, 3 plus 1, this is 0. So it is divisible by 11. और ऐसे भी कर सकते हो जो प्रीवियस मैंने बताया था, 3 minus 1 is 2 plus 1 minus 3 is minus 2. This gets cancelled, remaining is 0, so it will be divisible by 11. Now question based on this. तो इसको शॉर्टकट भी ऐसे याद रख सकते हो, कोई भी एक पैलिंड्रोम हो और उसमें इवन नंबर ऑफ डिजिट्स हो, इवन नंबर ऑफ डिजिट्स, तो वो नंबर क्या होगा? दैट विल बी डिविजिबल बाई 11. एग्जाम्पल 1 2 5 5 2 1. दिस इज अ पैलिंड्रोम. अगर आप उसको इस साइड से पढ़ो या इस साइड से पढ़ो दैट इज सेम. तो ये नंबर क्या हो गया? पैलिंड्रोम. और इसमें इवन नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, 3 प्लस 3 6 डिजिट्स, सो इवन नंबर ऑफ डिजिट्स, तो ये नंबर क्या होगा? 11 से डिवाइड होगा. तो प्रीवियस एग्जांपल 1 3 3 1, तो ये भी पैलिंड्रोम है. दिस इज ऑल्सो अ पैलिंड्रोम. दिस इज हैविंग इवन नंबर ऑफ डिजिट्स दैट इज 4 डिजिट्स, तो ये भी नंबर क्या होगा? 11 से डिवाइड होगा. Let's take a question. If a number 857832 is divisible by 11, then find the value of a. एक नंबर है that is 857832. तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11, तो हमें क्या पता करना है? a की वैल्यू. सो जस्ट टेक अल्टरनेट डिफरेंस. 3 minus 2 is 1, take 1, plus 7 minus a is 7 minus a itself, 7 minus a, plus 8 minus 5 is 3. This should be a multiple of 11. So 1 plus 7 is 8, 8 plus 3 is 11. 11 minus a is equal to, that should be 11. तो 11 में ऐसा क्या घटाएंगे कि हमें 11 ही मिले? That is 0. तो a value is 0. You can verify using calculator. Substitute a value as 857032. This value will exactly divisible by 11. तो करना कैसे? Take the alternate difference. Alternate difference का sum. 3 minus 2 is 1. 7 minus a is 7 minus a. 8 minus 5 is 3. तो 1 plus 7 is 8. 8 plus 3 is 11. Minus a should be multiple of 11. तो अगर आपके मन में ये सवाल है, इफ यू आर हैविंग दिस डाउट, 11 माइनस ए इट कैन बी 22 एज वेल. तो 11 में ऐसा क्या घटाएंगे कि 22 आ जाए? तो ये होगा 33, राइट? माइनस 33. बट 11 ये इज अ सिंगल डिजिट नंबर, ये एक 1 डिजिट नंबर है, तो 33 कैन नॉट बी द आंसर. तो ओनली पॉसिबल वैल्यू इज 0. Combined divisibility of 7, 11 and 13. Combined divisibility of 7, 11 and 13. Now this one is very important. अगर कोई भी एक नंबर हो जिसमें रिपीटिंग पैटर्न हो, किन नंबर्स का? 3 डिजिट नंबर्स का. फॉर एग्जाम्पल ABC और 1 2 3 1 2 3 और 6 5 7 6 5 7. तो इस टाइप का कोई भी नंबर हो, ये नंबर क्या होगा? 7 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी डिवाइड होगा, 13 से भी डिवाइड होगा, राइट?
अगर इस तरह का नंबर नहीं है, मान लो अ नंबर इज गिवन 548, तो ये नंबर भी क्या होगा, इन तीनों से डिवाइड होगा। अगर और द गिवन नंबर इज नॉट ऑफ दिस टाइप, अगर दिया हुआ नंबर इस टाइप का नहीं है, फॉर एग्जाम्पल 566 553 इस तरह का नंबर है, हमें चेक करना है कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7, 11 और 13 और नॉट। तो इस टाइप में क्या करना है, 3 का एक ग्रुप बनाना है। वी हैव टू मेक अ ग्रुप ऑफ 3 नंबर्स ईच। तो 566 इज अ ग्रुप नंबर, 553 is a number. Now take the difference, 566 minus 553. So what is the difference? 6 minus 3 is 3, 6 minus 5 is 1. तो अगर इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस अगर 7 से डिवाइड होगा तो नंबर भी 7 से डिवाइड होगा, डिफरेंस 11 से डिवाइड होगा तो नंबर भी 11 से डिवाइड होगा, डिफरेंस 13 से डिवाइड होगा तब भी नंबर 13 से डिवाइड होगा। यहाँ पे नंबर इज डिविजिबल बाय 13, तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 13, डिविजिबल बाय 13। टेक वन मोर एग्जांपल, 767 756। So make a group of 3 numbers, 767 756, difference is 11। तो डिफरेंस 11 होने की वजह से दिस नंबर इज डिविजिबल बाय व्हाट, 11, राइट। तो अगर नंबर इस टाइप का हो 756 तब ये 7 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी डिवाइड होगा और 13 से भी डिवाइड होगा। लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। A 6-digit number is formed by repeating a 3-digit number, for example 153 or ABC, then the resultant number will be divisible by what? Options are only 7, only 11, only 13। तो हमें पता है इस टाइप का कोई भी नंबर होगा तो वो 7 से भी होगा डिवाइड, 11 से भी डिवाइड होगा एंड 13 से भी डिवाइड होगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस आर ओनली 7, ओनली 11, ओनली 13, मतलब ऑप्शन क्या आएंगे, ऑल ए बी एंड सी। तो बट देयर इज नो सच ऑप्शन, तो हाउ वी हैव टू फाइंड, टेक अ नंबर 153, एग्जाम्पल में जो दिया है वही ले लो, 153। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 153,000 प्लस 153, तो इस नंबर को ऐसे लिख सकते हैं। Now take 153 common, so this is 1000 plus 1, so this can be written as 153 into 1001। तो इसका मतलब क्या है, क्लियरली ये जो नंबर है वो 1001 से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो द आंसर इज 1001। अभी कुछ लोगों के मन में अगर डाउट है, सर प्रीवियसली यू सेड इफ एनी नंबर ऑफ दिस फॉर्मेट ABC is divisible by 7, 11 and 13, तो ये 7 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी डिवाइड होगा और 13 से भी डिवाइड होगा, मतलब क्या तीनों के मल्टीप्लिकेशन से भी डिवाइड होगा। तो 7 into 11 into 13 is 1001। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, बोथ यू कैन डू। तो नाउ व्हाट इज द कंक्लूजन, तो फाइनली हमें नंबर ये फॉर्मेट का मिल गया 1001 का। अगर कोई भी नंबर ट्रिपलेट हो, ABC हो, 1001 से डिवाइड होगा। या फिर ऐसे भी कह सकते हो, जो नंबर 1001 से डिवाइड होगा तो वो नंबर इस फॉर्मेट का होगा, ABC। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो कंक्लूजन क्या था, अगर नंबर ABC फॉर्म का होगा, दिस नंबर is divisible by 1001। या फिर उसका उल्टा भी लिख सकते हैं, if a number is divisible by 1001, तो वो जो नंबर होगा वो किस फॉर्मेट का होगा, ABC। Now come to the question. Question says if A, B, C, D, E are the digits and ABC into D, E, D is ABC into ABC,
देन फाइंड डी प्लस ई। प्रीवियसली हमने देखा था, लेट्स कम टू दैट स्लाइड। तो 153 को हमने क्या लिखा था, 153 इंटू 1001, राइट। तो क्लियरली अगर ए बी सी इंटू डी ई डी इज ऑफ द फॉर्म ए बी सी, तो क्लियरली ये जो डी ई डी होगा ये 1001 ही होगा। नाउ राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ डी एंड डी वैल्यू इज 1, E value is 0. So what is D plus E? That is 1. You have to remember this one. इसको याद रखना पड़ेगा. So you cannot solve this at the time of exam. If you remember, you can easily solve within seconds. So अगर कोई भी नंबर मान लो XYZ को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1001 से, आंसर आएगा XYZ. So that number cannot be other number than this 1001. The only possible value is 1001. Now how to create shortcut for divisibility? How to create shortcut? तो हमने shortcut पढ़ा, we just find the shortcut for these numbers. 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 is not required, 11, 12, 13. These numbers we found. So if you want to find the shortcut for 17 or 19 or 29, how will you find? So instead of remembering the shortcuts, learn how to create the shortcut for divisibility. Let's start with 17. Now take the last digit 7 and multiply with some number plus remaining. So 7 I am multiplying with some x. So what is the remaining number here? It is 1. तो इस फॉर्म में जो भी नंबर होगा that should be divisible by 17. Now put x is equal to 1, 2, 3 etc. So this plus or minus remaining. Now if you put 1, 7 into 1 is 7, 7 plus 1 is 8, 7 minus 1 is 6, not possible. If you put 2, 7 to the 14 plus 1, 15, 14 minus 1 is 13, not possible. 3, 7 3 is 21 plus 1, 22, 21 minus 1, 20, not possible. 4, 7 4 is 28 plus 1, 29, 27, not possible. Next 5 क्या होगा, 7 5s are, if you put x as 5 plus or minus 1, 7 5s are 35 plus 1 is 36, 7 5s are 35 minus 1 is 34. Now here you are getting a number that is divisible by 17. कब आया ये नंबर? माइनस करने के बाद. तो इसका मतलब क्या हुआ, लास्ट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई कर दो एंड सब्ट्रैक्ट 1, राइट. To check divisibility by 17, so last digit into 5 minus remaining number. So this is how you have to find. Now for 19 how we have to find? Take the last digit into some x plus remaining. Last digit is 9, x plus remaining number is 1. This should be divisible by 19. So what is the possible value of x? 2. If you put x is equal to 2, 9 into 2 plus 1 is 19. तो करना क्या है, लास्ट डिजिट into 2 plus remaining. Example 361. So remove the last digit is 1 into 2 plus what is remaining, 36. So this is 38. So 38 is divisible.
अगर आपको पता नहीं कि 38 डिविजिबल होगा या नहीं, अगेन डू द सेम थिंग, रिमूव द लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट निकालना है 8, 2 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस द रिमेनिंग नंबर इज 3, 8 to the 16 plus 3 is 19. We know 19 is exactly divisible. For 29, last digit is 9 into x plus 2. तो क्लियरली 9 को अगर किससे मल्टीप्लाई करेंगे और 2 ऐड करेंगे तो डिवाइड होगा. तो इफ यू पुट x is equal to 3, 9 into 3 plus 2, this is 27 plus 2 is 29. Let's take one example, 2674. तो ये नंबर चेक करना है कि 29 से डिवाइड होगा या नहीं. तो क्या करना है, लास्ट डिजिट, ये था हमारा लास्ट डिजिट इंटू 3 प्लस रिमेनिंग, क्योंकि 9 हमारा लास्ट डिजिट था, 2 ये रिमेनिंग नंबर था. तो लास्ट डिजिट इज 4 इंटू 3, दैट इज 12 प्लस रिमेनिंग नंबर. Last digit is 4 into 3 will be 12. This 12 again you have to add here. So 9, 7, 2. तो again remove the last number 9. फिर से 3 से multiply कर दो. 9 3 is 27. Add 27 here. 54. Now check 29 is divisible by 54 or not. No. Then this number is also not divisible. So this is how you can create a shortcut for any number, literally any number. So here the video ends. If you have any query